Good morning, all. Are you listening? Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good morning, sir. Good morning, sir. It's very good morning. So, I am Professor Pramod Sahare, and I am teaching you engineering graphics for section A3. Okay. So, this is our first lecture, and that is online. So, I request all of you to kindly give the introduction by unmuting the mic and also showing your face so that I can see who you are. Okay. Yes. sir. I will call the names. Then Camera on. you can start. First name is given Akash Nallalwar. Are you there, Akash? Yes, sir. Yes, yes. Give the introduction of yours, who you are. Sir, myself Akash Talalwar. Hmm? I am from GN College. GN College. Okay, Yes, Balarsha. sir. So right now you are staying Yes, in Balarsha. yes, sir. I'm in Ballard. You are in Balarsha. Okay. Uh, how much percentage you got in 12th standard? Sir, 56. Okay. And in A3 section. Okay. Anything you want to Yes. say, Akash, No, sir. regarding this? Okay. Which branch? Computer science or electronics? Which branch? Electronics, sir. Electronics. Okay. Well. Okay. Fine. Next is Akanksha Tongarwar. Akanksha. Akanksha, are you there? Okay. Yeah. Akanksha is not there. Next is Anurag Bhavne. Present, sir. Yes, you can show your face, who you are, and you can give the introduction. Yes, yes, Anurag. Tell me about yourself. Your voice. You unmute the mic. Your voice is not audible. Unmute the mic. Yes. Now you Sorry. can. Yes. My name is Anurag Dilip Bhavne Hmm? From Chandrapur or somewhere else? from Jammu. From Chandrapur. Which branch? Hmm? Electrical. 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 Okay. Yes. Okay. Fine. Next is Ayush Shukla. Yes, sir. Yes. Tell me about yourself. Your name, from where you are, Ayush, and which branch. By unmuting the mic and my name also is show your Ayush. face so that I can see you. 1 minute, sir. Sir, myself Ayush Shukla. I am from Ballarpur, an From Bala electronics branch. Electronic. So instead of saying myself, you Yeah. can say I am or my name is. That is good. Okay. Okay, okay. Okay. Fine. Yes. Devanand Bhendare. Yes, sir. Yes. Unmute. Yes. Unmute the mic and show your face and give the introduction. Yes. Hello, sir. Yes. Hello. My name is Devanand Rajesh Bhendare. Hmm? I am from Chandrapur. Hmm? Which branch? Uh, my batch is B1. Ne, B1. But this is A3. No, I Yeah. think this is A3. No, A3 section. Yes, sir. Yes, sir. But he's saying Yes, B1. sir. No, you know your batch. This is A3 class. Okay, sir. Sorry, sir. Okay, you can leave. You can join B1. Huh? You are B1, no? So you can join that particular link. Huh? Okay. Yes. Otherwise Okay. your attendance will be not considered. No. So just see. You can talk Yes. your sir, and you see which WhatsApp link is there, and according to that you can join. Okay. Okay. Okay, Devana. Okay, sir. Yes. Yes. Next, Dharni Yelne. Present, sir. Yes. Give the introduction, beta. Dharni.
Unmuting the mic and Sir, also I am your. Yes. Sir, I am Dharni Elne. I am from Chandrapur and my branch is electrical. Branch is electrical. Okay, fine. Yes, sir. And A3, no? A3 batch? Yes, sir. Okay. Then Gayatri Dhakate. I am Gayatri Dhakate. I am live in Chandrapur. Branch is electrical. Electrical. Okay, fine. Next, Karan Akulwar. Sir, my name is Karan Akulwar Hmm? from Janala near Mool. Hmm? I have electrical branch. Electrical branch. Okay. Okay, fine. Fine, Karan. Yes. Thank you, sir. Khushi Bharti. Myself Khushi Sanjay Bharti. I am from You can, Ballarsha. My Khushi, you can branch say is my name is. My name is. No, don't say myself. My name is or I am. Like that you can introduce. my name is Khushi Bharti. I am from Ballarpur. My branch is electronics. Electronics. Okay, Bharti. Khushi. Sorry, Khushi. Yes, Kunal Paturkar. Kunal. I am Sir Kunal Paturkar. Hmm? I live in Chandrapur. Hmm? My branch is electrical. Okay, fine. Next time you wear full uniform. Huh? Okay, because everybody is seeing you. Yes, Mahima Khanke. Hello, sir. My name is Mahima Khanke. My branch is electronics, Branch is and electronics. I live in Chandrapur. Stay in Chandrapur. Okay, fine, Mahima. Then Mamta Shende. My name is Shraddha Sanjay Shende. Hmm? I am from Chandrapur. My Hmm? branch is electrical. Your name is Shraddha or Mamta? Shraddha. But it is Email ID Shraddha. Okay, that's why. Okay, fine. Which branch? Electrical. Electric. Yes. Yeah, okay, fine, Mamta. Thank Then you. Manu Sherki. Manu Sherki. Manu Sherki. You can Hello, make yeah sir. webcam. You can on the webcam. I can so that I can see you. Okay, sir. Yes. Hello, sir. My name is Vidhi Shetty, and I am from electronics branch. Electronics branch from Chandrapur. Yes, From sir. Chandrapur. Okay. So why there is dark in Yes, this sir. room? Yes, you can make the light no instead of in the darkness. So it will affect your eyes also. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Fine, Manu. Okay, sir. Next Thank you. is Mogalayan Dudhe. Hello, sir. I Yes. am from. My name is Mogalan Dude. I am from Gadchiroli. My Okay. branch is electrical. So right now you are in Gadchiroli, No, sir. Chandrapur. Chandrapur. So some relatives are there. Yes, sir. Okay, fine. Branch is electrical, no? Yes, okay. Yes, sir. Nitin Adlur, whether I am pronounced correctly or no. Nitin, yes. Present, sir. I am from Chandrapur, myself, Nitin Adlur. Branch? Branch is electrical. Branch electrical. Fine, Nitin. Then Prachi Gonmode. Sir. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. Myself Prachi Gunmode and I am from Chandrapur and my branch is electrical. Okay. Myself mat bolo. My name is or I am. No, that is good. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay, Prachi. The next Prachi Hatkar. She left. Okay. Rajan Narula. Sir, my name is Rajan. I am from Ballarsha. My branch is electric. You can show your face by Sir, on किया ना? not able to see. No? सर गलती से लेफ्ट हो गई थी. हाँ प्राची 1 minute. 1 minute. Rajan
I'm not getting you. I'm not getting you. Your face is not visible. सर ऑन कैमरा कैमरा ऑन नहीं किया आपने बेटा? सर कैमरा ऑन है ना अभी ऑन हुआ. Yes. सर Nice माय face. No? You are so smart. Why you are hiding yourself then? Okay. Yes, yes. Fine. Which branch, Rajan? इलेक्ट्रिकल सर Electrical. Fine, fine. Okay. Yeah, yeah. Now you can. Yeah. Prachi Hatkar. Yes, Prachi. Unmute yourself first. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Prachi Hatkar and I am from Chandrapur and my branch is Electronics and Communication. Electronics and communication. Okay. Fine, fine, Prachi. Next, Riddhi Kondawar. Good morning, sir. Good morning. Yes. I'm Riddhi Kondawar Hmm. from Electrical branch and I live in Chandrapur. So many books are kept at the back of your at the back, Riddhi. You are reading all these books? No, sir, that's the background. Okay, that is texture. Okay, fine, Riddhi. Yes. Next, Ravit Kumar Rane. Ravit Kumar Rane. My name Yes. My name is Rohit Kumar Shalik Rane. I am from Chandrapur. My branch is electronics. Electronics. Fine, fine, Ravit Kumar. Next, Sarvesh Rangari. I am Sarvesh Rangari. I am from Balasha and my branch is electrical. Okay, Sarvesh, fine. Then Sejal Sao. Hello, sir. My name is Sejal Sao. I am from Chandrapur and my branch is Electrical. Fine, fine. Next, Shirish Kadam. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Shirish Kadam from Chandrapur and my branch is electrical. Now in Chandrapur, you are staying outside which area? Lalpet, sir. Lalpet. So in environment you are learning, huh? No outside sound and which will disturb you. No disturbance is there. No, Eco sir. friendly. Outside I am living. Okay, outside your home, outside of your home, na? Yes. Okay, 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 fine. Yes. Next name is SK. I don't know SK. Yes, yes. You can unmute yourself. Yes, SK. Who is SK? My name is Shubham Kamde, sir. I live at Nagala. Nagada. Okay. Huh. Branch. Electrical branch, sir. Branch electrical. Fine. Then Tushar Ramteke. Hello, sir. My Hello. name is Tushar Ramteke and my branch is electronics and I live in Telangana. Where? Telangana. Telangana. Baapre. From Telangana Yes. you came here. Yes, sir. Okay. So right now you are in Telangana. Yes, sir. Fine. So when the college will open, that at that time you will be here in the hostel. Yes, hostel or Separate with room. my sister. Okay. So your relatives are here, no? Yes, Yeah. Which branch you say? electronics. Electronics. Fine. Okay. Then Vaishnavi Pal. My name is Vaishnavi Pal and I'm living in Gugus and my branch is Electronics. Electronics. Fine. Fine, Vaishnavi. Then Vibhanshu Ramteke. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Vibhanshu Pavan Ramke and I live in small village Bhatari, but now I am living in Chandrapur Hmm. and I am from electrical branch. Bhatadi means that Tadoba area, no? Yes, Paili Bhatadi. yes, yes. Yeah, I was there when the Gram Panchayat election was there, no? So I was there as an presiding officer in ZP school. Okay, in Bhatadi I visited at that time. Okay, Vibhanshu, fine. Next is Yash Puri. Yash Puri. Hello, sir. My name is Yashpuri and I am from Ballarpur. My branch is electronics. Electronics. Fine, Yash. Yes. Okay. And last name is Yusuf Sayyed. Hello, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon. I'm from Ballarsha. Hmm? My name is Syed Yusuf Ali and my Hmm? branch is electronics. Electronics. Okay, fine. Anybody left? कोई बचा है क्या जिसका मतलब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? He or she can unmute. Okay. So
everybody present, and the subject which I am teaching you is the most important one as well as difficult one. Okay, now important one, but the branch for say mechanical branch or civil branch, those students, they have graphics for entire year. But for your electrical or electronics, this is only for their first semester, so it not that much useful in the future. But whenever you are going in a design field, so graphics is most important. Okay, so that's why as it is a subject in your first semester, so you have to deal with it, and you have to secure good marks, and ultimately you have to pass this subject. So I am there with you for the entire session and taking this subject. Okay, and suppose if it is offline, then we will meet in the classroom. But suppose until and unless government give permission for us to take offline classes, until then we have to deal with the online classes. And I hope all of you will join the class physically in the sense, so many students, they are simply making on the computer or mobile phone, but they are roaming here and there. It should not like that, because EG is very difficult subject, and once you miss any class, no, then you are not supposed to understood anything which I teach you in the next class. So that's why it is very important subject. So I hope you all will stay with me in the class. Okay, so I will share the syllabus with you. First of all, we'll discuss the syllabus, and then how are the markings and all. Okay, the syllabus we will start in the next week, but today we'll only discuss the syllabus and all the things. So I'm sharing the screen. Are you getting the screen? No, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. It No, will be there. it's not clear. No, sir. देखो आएगा. No, sir. Waiting, sir. हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ना. Okay. Yes. Subject name is engineering graphics. Okay. So स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना अभी तक. स्क्रीन शेयर तो हो गया, बाकी लोगों को दिख रहा होगा ना. किसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा सर. मैंने तो शेयर किया है. सर आपको पिन किया होगा गलती से उन्होंने. नो सर. हाँ, हो सकता है. वो दो है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना. तो इसमें एक यूर प्रेजेंटेशन वाला जो स्लाइड है ना, वो वाला ऑन रखो. ठीक है, पहला वाला नहीं. ठीक है, दो है उसमें, तो जहाँ पे यूर प्रेजेंटेशन दिख रहा है उसको पिन करो. आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So lectures 2 hours per week, means only 2 lectures are there in a week. So it is not possible for us to complete syllabus for only 2 lectures in a week. So whenever there is need, I will call you and I will take a few more lectures. Okay, so whenever needed. So I hope you will cooperate. Now examination pattern is that internal assessment 20 marks, then mid-term test 20 marks, and end semester exam 60 marks. Now internal assessment means what? Suppose if I give you any assignments or quizzes, so that carries 20 marks. Okay, that we will take through Google Classroom and Google Form. Midterm test also, suppose if it is offline, then we will conduct physically, or it will also conduct through the Google Form. End semester exam will be taken by the university, 60 marks. And this year I think 60 means if you want to secure 40%, means 24 marks. If you secure, then you are successfully clearing the exam. Okay, so there are 20 and 20, 40 marks are internals, and 60 marks you have to secure from the university. And duration is 4 hours, because you have to draw the diagrams, so you will get 4 hours to draw the things. Okay, so unit number one, as you can see, drawing standards and geometrical constructions. Okay, now in that you have to draw the things like suppose if you learn geometry in your syllabus up to 10th standard, correct? 10th standard तक आपने पढ़ा था geometry.
तो उसमें आपने Yes, कई sir. सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि टाइप्स ऑफ लाइंस यू आर लर्न, so that we will again see types of lines. Then lettering means A to Z Yes, and sir. small a to Z, how to write 1 to 10, so that also. Then dimensioning, how to give dimensions, how to take scaling conventions. So all these things are the theoretical one. So this makes a sheets also. In practical section also I'm taking. Now in practical session what happened, that you have to complete maximum 10 sheets are allotted. We'll try to complete 10 or 8 sheets. A drawing sheets you have to buy, and then afterwards you have to whenever I give you some assignments, you have to draw on that drawing sheets. So that drawing sheets carries extra marks and viva and all. So I think 50 marks are there on practical and 100 marks on the theory subject. So separate passing is there. So types of lines, then lettering, dimensions, scaling convention, that will start in the next week. Okay. So that is known as drawing standard. Then geometrical constructions, in that you can see dividing a given straight line into any number of equal parts. So you can divide a line into equal parts. So that method I will tell you. Now it is very difficult for us to because I'm here remotely and I'm telling you, because in the class whenever I'm teaching, so students, if I have any difficulty, I'm with them and I just tell them physically how to do it. Now it is very difficult for us from here. So then also I will try to make some videos and try to teach in such a way that you can able to draw in the sketchbook there itself. Okay. So you have to first of all purchase a sketchbook, then pencils, eraser, set squares you have to purchase. Okay. So all these things you have to purchase, so that because ours is a drawing subject. So for that you have to be ready with your sketchbook, pencil, then set squares, eraser and everything. Okay. So dividing a line into number of equal parts, I think you are learning in 8th standard in geometry. So that thing is that will again take. Okay. So this question is asked for 6 marks. So divide a line in six parts or 7 parts or 8 parts. So what is the method to do it? I will tell you. Then bisecting a given angle. Okay. Now angle bisector you have to draw. So that how to do it, that I will teach you. Then drawing a rectangular polygon. Polygon means hexagon or pentagon or octagon. So there are various methods to draw regular polygons. Now this question is also there for 6 marks. So, and especially if they are asking a specific method, then you have to follow it. Otherwise you can go with any method. Okay. There are also some special methods of constructing a pentagon and hexagon. So that methods also I will teach. But suppose if it is asked a specific method name, then you have to follow that method. Otherwise, if it is not asked, then whatever method you like, the simplest one, that you can follow. Okay. यानी जो method आपको लगता है कि easy है, वो method से आप जा सकते हो. But अपना काम ये है कि हम लोग पूरी methods पढ़ लेंगे, जो methods होते हैं pentagon और hexagon draw करने के लिए. So unit 1 is so easy. How? Because there are only these simple things: pentagon, hexagon drawing, dividing line into equal parts. Then that types of dimensions. So it is very easiest unit. Unit number 1 is the most easiest. So 6 hours are required to complete this unit. Then unit number 2, orthographic projections and projections of points. Now this starts from unit number 2. Now exactly orthographic projection means what? Suppose if you consider any object, suppose say your mobile phone is an object. Now suppose if somebody is looking the mobile phone from the front side, how it is looks, that is front view. From the top, how it looks, and from the side, how it looks. So that makes your orthographic projection. Okay, means an object is given to you, you have to visualize, so that whether that object, how it looks from front, how it looks from left, and how it looks from top. So these things we will cover, and mostly the person who is having good visual sense, they can able to draw these things very easily. Okay. तो जैसे कि हम हमारे घर की बात करते हैं ना, घर में अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो तो क्या दिखता है, टॉप से क्या दिखता है और लेफ्ट साइड से क्या दिखता है, तो वो आप वहां से देख सकते हो. वो यूनिट नंबर 2 हो गया. तो ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का मिला के मिड सेमेस्टर एग्जाम होती है. जनरली जो एमएससी होगा, एमएससी इस बार आई थिंक मार्च में है, उसका आपको शायद सर ने एकेडमिक कैलेंडर भी शेयर किया होगा.
अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, मार्च की कुछ से भी 13-14 को एग्जाम है उसका, मिड सेमिस्टर. So until March, we have to complete Unit 1 and Unit 2 so that you can able to give mid-semester examination. Okay. Then after completion of Unit 1 and Unit 2, we will going to Unit number 3. So in Unit number 3, we will deal with projections of lines. Okay. Earlier here we will see projection of points. ये projection of points हो गया. Points के बाद यहाँ पे projection of lines होता है. अगर आपको projection of points easily समझ में आता है, then we can able to deal very nicely with projection of lines. उसके बाद होता है planes. प्लेन्स में आप देखोगे स्क्वायर होता है, देन उसके बाद हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है. प्लेन्स में हम लोग उसके वेरियस प्रॉब्लम्स लेंगे और उसमें ट्रेसेस. तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट सपोज इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो फिर आपको ये समझ में आएगा. अगर पॉइंट समझा तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन समझ में आता है, अगर लाइन समझ में आया तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन समझ में आता है. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. Then unit number 4 is projections of solids. Solids मतलब 3 dimensional हम उसको बोल सकते हैं. यहाँ पे आपका 2 dimensional होता है, बट सेम चीज आपको यहाँ पे 3 dimensional में करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स. ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में जो भी प्रिज्म हो गया या पिरामिड हो गया, ऐसे ही चीजों से हम डील करेंगे. तो होता है हेक्सागोनल पिरामिड और पेंटागोनल पिरामिड. हाँ, तो इस तरह के सॉलिड्स रहते हैं. वो सॉलिड में एग्जाम्पल दिया रहेगा कि वो 30 डिग्री इंक्लाइन हो रहा है एक्सिस से, या 30 डिग्री इंक्लाइन हो रहा है से एपेक्स से. तो फिर उसका अगर उसको 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तो उसका फाइनल व्यू कैसा दिखेगा, हाउ इट लुक्स. सो ये 3 स्टेज का प्रॉब्लम होता है, 3 स्टेज प्रॉब्लम. आई विल सी हाउ वी कैन ड्रॉ इन ऑनलाइन एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यूनिट नंबर 4 में आएगा और थोड़ा टिपिकल है. और इसमें आपको मतलब एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है तो 1 आवर जाता है, इसलिए तो 4 आवर्स का एग्जाम पेपर होता है. तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कंज्यूम्स मोर टाइम. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. सो 3 स्टेज प्रॉब्लम बेसिकली. एक मतलब अभी इसमें शायद आई थिंक 10 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल आता है. पहले जब 80 मार्क्स का पेपर रहता था तो उसमें ये 16 मार्क का एक प्रॉब्लम आता था पूरा कंप्लीट, और करीब 1 आवर आपका कंज्यूम होगा. उसमें अगर आपको बाद में पता चला कि यार स्टार्टिंग गलत हो गई तो पूरा का पूरा गलत. सो यू हैव टू बी केयरफुल. सो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन समझ में आएगा. ठीक है. यूनिट नंबर 5 में सेक्शंस ऑफ सॉलिड होता है. सेक्शंस ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड जो होगा उसका सेक्शंस आपको लेना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, उस सॉलिड को आपको कट करना पड़ेगा. तो आप कैसे कट करते हो, है ना, 2 पार्ट में कट करोगे तो कट करने के बाद वो कैसा दिखेगा सॉलिड, तो वो आपको बताना पड़ेगा. तो उसको सेक्शंस ऑफ सॉलिड ऐसा बोलते हैं. जैसे कि अगर आप सपोज कोई पिज्जा ऑर्डर किया, उसको अगर आप कट करते हो तो कट करने के बाद जो बचा वाला पोर्शन कैसा दिखता है. सो सिमिलरली देयर विल बी ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू गिव सेक्शन लाइन. तो उसमें एक एंगल दिया रहेगा, वहां से आप सेक्शन ले सकते हो. देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इट इज टिपिकल वन. जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक देखा था. ऑर्थोग्राफिक मतलब क्या था कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, है ना, ये आपको निकालना, एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा. लेकिन यहाँ क्या रहता है आइसोमेट्रिक में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू दिया रहता है. मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, सामने से ऐसा दिखेगा, लेफ्ट से ऐसा दिखेगा, टॉप से ऐसा दिखेगा. तो ऑब्जेक्ट कैसा बनाओगे आप, है ना. सो इसमें ज्यादा विजुअलाइजेशन आपको लगेगा. सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. सो दिस प्रॉब्लम्स विल टेक. एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग. ओके, तो इसमें आपको सरफेस डेवलपमेंट है, जैसे कि सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस हो गए, उसका डेवलपमेंट वाला पार्ट है, और जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म्स भी आएगा. और ड्राफ्टिंग बोला है कंप्यूटर एडेड, मतलब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है ऑटोकैड, अगर आपने नाम सुना होगा. सो ऑटोकैड में इसका ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. और इसके जो रेफरेंस बुक्स है जो आपको यूज करना है, दैट इज एनडी भट्ट, मोस्ट पॉपुलर बुक एनडी भट्ट. अगर आप ये बुक खरीद लेते हो या इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, यू विल गेट द कॉपी ऑफ एनडी भट्ट ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो टेक बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑल्सो. देन यहाँ पे के.वी. नटराजन, के. वेणुगोपाल एंड वी. प्रभु राजा, ये 3 बुक्स भी रिकमेंड की गई है. ओके. सो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, पैटर्न जो है वो मैंने आपको बताया कि देखो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये वाला ME 104 है ना, इसमें दिया है 2 लेक्चर्स दिए हैं. ओके. देन
इंटरनल असेसमेंट 20 दिया है, मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन 20 और एंड सेमिस्टर कितना 60। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 क्रेडिट्स है। ओके, तो उसके बाद आपको लैब में जाते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की लेबोरेटरी है यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकल में आपको 4 प्रैक्टिकल्स, मतलब एक वीक के 4 प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 2-2 आवर्स के, आई थिंक 2 हो सकते हैं, या एक ही 4 आवर्स का एक दिन का दे सकते हैं। और 60 इंटरनल असेसमेंट है और 40 एंड सेमिस्टर है, मतलब इसमें भी 100 मार्क्स दिया है। सो पहले 50 था, अभी शायद से बाटू में कंप्लीट चेंज कर दिया है। सॉरी। सो 60 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और 40 मार्क्स एंड सेमिस्टर, सो ऐसा 100। और इधर में 40 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो थ्योरी में है ना, ये आप देखोगे थ्योरी में, और 60 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। इधर 40 मार्क्स का रहेगा, इधर 60 मार्क्स का रहेगा। So theory and practical both are dealing with me. So I will be the in charge of both the subjects. So this was the introduction of the syllabus. Any questions if you want to ask, you can unmute the mic and you can ask me the question. What is meant by credit? क्रेडिट मीन्स जैसे कि 10 क्रेडिट, पहले कैसा रहता था, हम लोग परसेंटेज मिलते थे आपको, बराबर है। सीबीएसई में कुछ लोगों को होता है ना 10 में से 7 मिला करके, है कि नहीं, होता है ना, आपको मिला है कुछ सीबीएसई वाले पर्सन हो गए। अगर स्टेट बोर्ड वाले होंगे उनको क्रेडिट पता नहीं। हाँ, सीजीपीए, करेक्ट। सो जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे उनको क्रेडिट्स पता नहीं, उनको क्या पता है, परसेंटेज 100 में से 50% मिले या 64% मिले। बट सीबीएसई वालों को पता है कि 10 में से 7 मिला या 10 में से 8 मिला है, तो वो जो 10 है वो टोटल हो गया। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट्स होंगे तो हर एक सब्जेक्ट पे 2-2 का क्रेडिट होता है, उस तरह से उसको क्रेडिट समझा जाता है। तो ये सब्जेक्ट पे 2 का क्रेडिट दिया है, और टोटल जो क्रेडिट है वो टोटल क्रेडिट का आई थिंक 25 कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 25 ये है ना, 25 का इसमें सभी सब्जेक्ट्स पे दिया है। जैसे कि मैथमेटिक्स पे 4 का क्रेडिट दिया है, सबसे ज्यादा है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल पे 3 है, फिजिक्स पे 4 है, ग्राफिक्स पे 2 है, बेसिक सिविल पे 3 है, ऐसे मिला के टोटल 25 है। इसमें से आपका सीजीपीए बनेगा, और ये आपको ऑलमोस्ट 10 में से मतलब 8 के अबाव अगर रहता है तो बेटर रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट 60% के अबाव अगर आप लाते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू फॉर द कैंपस इंटरव्यू इफ इट इज देयर इन फाइनल ईयर मोस्टली। और यूजुअली 10th और 12th में 60% रहना जरूरी होता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। मोस्टली कुछ कंपनियां मांगती है कि 10th और 12th में 60%, एंड फाइनल ईयर में अपनी डिग्री जो बनती है फाइनल ईयर पे बनती है। बट ट्राई करो, क्योंकि आपका ये पहला साल है, तो ट्राई करो कि हर साल में 60% के ऊपर मिले। ओके, तो उसके लिए आप कैजुअल मत हो, हर एक सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दो और प्रॉपरली पढ़ाई करो, तो आपको वो सब अचीव हो जाएगा। और बैकलॉग के लिए मत रखो, मतलब पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ये आप उसको सोचो। ठीक है, ये होता है क्रेडिट। और कुछ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क?